and for the weeks, 3 weeks I am going to give you, 3 to 4 weeks I am going to give you for presentation. तो नहीं तो एक आध लेक्चर में प्रेजेंटेशन में एंगेज करूँगी, एक आध लेक्चर और एक दो प्रैक्टिकल का आवर्स, ठीक है। तो these papers you can search in Google Scholar. Google Scholar में जाओ आप। मॅम हाँ तुम्ही पोस्ट नाही केलेत कोणते पेपर्स? लास्ट पीपीटी 3 टाकलंय तुम्ही मी नाही latest. ह्याच्यावर केलंय, मी गुगल ड्राईव्हवर टाकलंय, ड्राईव्हरची मी शेअर केलेत तुम्हाला, मेल आली असेल। मेल? अच्छा ओके. हो मॅडम आली. हा मेल आली असेल तुम्हाला, मॅम एडिटेबल मेल आहे। मी क्लासरूम मध्ये नाही टाकलं, क्लासरूम मध्ये टाकू का परत एकदा? क्लासरूम मध्ये टाकलेलं बेटर राहील मला वाटतं। दिसतंय मॅम, मेलवर दिसतंय. हा मेलवर दिसते, मी तेच दोन दोन ठिकाणी नको म्हणून मी हे नाही केलं। हा तिथे तुम्ही करा, मी नंतर काय करतो रे विशाल प्रेझेंट? अच्छा मॅम हा हा बोला। आम्ही एडिट केलेलं दिसतंय का, चेक करा ना. नाही दिसत आता, ह्याच्यात कुठे दिसते बघ ना, ह्याला शेअर केले ते नाही दिसत, तू टाकून घ्या तुम्ही आता। हा दिसतंय हा मॅम. दिसतंय दिसतंय हा दिसतंय. नेम्स घेतलं का? ठीक हो. है। तो इन सिमिलर वे अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो यू हैव टू डू दिस। हाँ, आप अपना रोल नंबर डाल दो उसमें, देन within few days I will assign you the dates for presentation. You have to search this paper in Google Scholar। Google Scholar में सभी पेपर्स मिलेंगे, शायद एक आध कोई नहीं मिलेगा या नहीं ओपन होगा, ऐसा होगा, बट ऑलमोस्ट सभी पेपर्स मिलेंगे आपको। तो वो पेपर से फिर से लास्ट टाइम जैसा 2-3 पेज का रिपोर्ट बनाना है, पीपीटीज यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, पीपीटीज और पेपर रिपोर्ट दोनों सबमिट करना है आपको ड्राइव पे, मैं वो दे दूंगी सबमिशन के लिए, ठीक है। तो आप ये मटेरियल सर्च करना शुरू करो। हाँ 3च जणांचा ग्रुप हवा है ना? मैक्सिमम 3। ओके किसी को लगता है मैं अकेले दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, 2 चलेगा, 3 चलेगा, नॉट मोर देन, ठीक है। और बहुत अच्छे पेपर्स है इसमें, अगर आपको चाहिए स्टडी के लिए कुछ टॉपिक सिमिलर लेना चाहते हैं आप, तो वो सिमिलर ले लो ताकि आपका थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। ठीक है फिर तो 2 weeks we are going to conduct the experiment on NanoHub only, and after that 2 weeks I am going to 2 to 3 weeks I am going to conduct that presentation. Within that time only you have to give the presentation. Last time जिन लोगों ने presentation नहीं दिया, directly I have given 0 marks for them, तो आपका तुरंत टर्म के मार्क्स कम हो जाते हैं, समझ में आया? क्योंकि कंटिन्यूस असेसमेंट में वो एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 0 देती हूँ तो आउट ऑफ 25 आपका तुरंत मार्क्स कम हो जाएंगे। तो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। हाँ, यू आर हैविंग, इस बार तो मैं सेपरेट 5 मार्क का वेटेज में प्रेजेंटेशन को दूंगी और 20 मार्क्स वेटेज फॉर रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड 5 मार्क्स वेटेज आई विल गिव फॉर दिस। तो देना है किसी भी कंडीशन में आपको ये पेपर सर्च करके, जो पेपर मैंने बताया वो पेपर का पीडीएफ भी चाहिए तो अपलोड करो, नहीं तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन बना के उसका रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट इज अगेन सॉफ्ट कॉपी, प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशन देना भी है, ठीक है। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. ठीक है, ओके। देन नाउ आई विल स्टार्ट टुडेज एक्सपेरिमेंट, that is names resonator. See, all the devices are the different, they are meant for different application, but construction, if we see, these constructions are near about same. Some fluctuating or some deflecting elements will be there, and depending upon how much voltage value we are going to apply, the deflection will be there. So that we have to see. So I will is it visible to you? Yes ma'am. Okay. आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया कि नहीं इसका? हो मैडम. किया ना? तो सी, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी MEMS resonator. Okay.
You see, this is the model description. Here, this is a MEMS resonator. Here, in this MEMS resonator, these two middle. मॅम Ah, तुम्ही काय सर्च केलं टूल्स मध्ये? टूल्स मध्ये मी सर्च नाही केलं, कारण मी काय केलेलं त्याला फेवरेट मध्ये टाकलेलं, त्यामुळं मला मेम्स दिसतात ते टूल्स सगळेच. रेझोनेटर ओके ओके. तुम्हाला मी नाव देईलच ना एक्सपेरिमेंटचं, त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल की हे बघा मेम्स रेझोनेटर टॅग. मेम्स नाव दिलं ना, देन अंडर मेम्स विच आर द एक्सपेरिमेंट्स दैट आर विजिबल टू यू, और शुगर क्यूब, ये दो ही देना है आपको. शुगर क्यूब कैंटिलीवर है, शुगर क्यूब एक्सेलरोमीटर है, थर्मल एक्चुएटर है, और मेम्स रेजोनेटर है, और एक मेम्स पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशनल डिवाइस एक है, वो रह गया अपना. ठीक है, तो मेम्स रेजोनेटर. तो हियर दिस इज अ पॉम ड्राइव टाइप ऑफ मेम्स रेजोनेटर. हियर इन दिस these are the two beams, you can say. These will deflect depending upon the applied voltage, and this deflection will be depending upon the thickness, length, which material we are using, depending on that deflection will be there. तो कौन सा है deflection, कौन सा होगा, ये दो के बीच के जो दो दिख रहे हैं, these beam. Okay, तो here parametric definition में देखेंगे हम. Material property, again you can see material property, which material is used, 0.3 Poisson's ratio 165 e⁻⁹ and 2300. This material belongs to silicon. Okay, आपको ये दूसरा मटेरियल देना है, तो suppose you can see here how it is deflecting. Here downward direction and upward direction it will deflect. So here if you want to assign this is silicon, these properties they have given for the silicon. If you want to assign for polysilicon, then for polysilicon what is Poisson's ratio, Young's modulus and density, that values you have to see in the chart and you can write these values. मैंने मेम्स मटेरियल्स के टाइम पे एक टेबल दिया है पड़ा, there you are having that values. You can assign, if you assign that values, then this material will behave like polysilicon. So for polysilicon is more flexible, so more deflection you will get. समझ में आया? So like this, depending upon which type of material you are using, because Young's modulus of silicon is less than the Young's modulus, is greater than the Young's modulus of the polysilicon. Therefore, Young's polysilicon is more rigid than the polysilicon. If we are giving the values of polysilicon here, the deflection will be more for same applied voltage. ठीक है, so depending upon which material you are using, the deflection will be there. Then for sometimes for same material, if you are applying suppose initially 10 voltage, the deflection will be some value. If you are applying 20 voltage, the deflection will be another value. Like this also there. So means either you can change the applied voltage or you can change the material also. Again, material thickness is again responsible for the deflection. So how much deflection you want, how much voltage you are getting, depending upon this you have to select the material, that material thickness, etc. Material will give you the material property, and geometric property means what? Geometric property, double folded beam and beam length, that is these dimensions. Okay, so here length, deflection beam, DF beam, length of width of this beam, width of this beam, length of this beam, then separation, DF beam, separation between these two, and width of beam, overall width. Okay, this much, this width is called as the BL. So all these parameters are given here for beam only. Okay, then center and side link. So center and side link means this link. For this link, what are the dimensions that are mentioned here? You can see here width, this is the width, this is the center width, and this is the length of the center. So these three dimensions are given. All the dimensions are in micrometer range. Then backbone and finger, here there are number of fingers are there. Then again dimensions of each fingers are mentioned here, and gap between the fingers are mentioned here. Then others में overall thickness, overall unit का thickness. So you can see the thickness is here 15 micrometer. Okay, so you can change the thickness also, and you can observe the deflection. Okay, analysis configuration में you have to, we are going to see the static analysis only.
So applied voltage is suppose initially 10 volt, we see, and directly we will see the simulation. Try the 1 minute. काहीतरी होतोय here. मॅम माझं आलं. आलं ना? नाही येईल, माझं बहुतेक काहीतरी इथं प्रॉब्लेम झाला होतोय. So you see here again the deflection is very less, therefore you are not able to see here. So you can see in the log file, you can see deflection dx current downward direction la deflection hota na, therefore it is minus 1.34 this much amount and divide 4.983 this much amount. So you take a snapshot of this and you change the value. Okay, suppose we change the value here in place of 10, if I make it 30. Okay, and then again if I simulate it, we'll see what is the value. Is there any change? See, you can see here in 3-dimensional diagram also it is visible. दिख रहा है आपको? Are you able to see? See, this is deflected here and this is deflected in upward direction and this is deflected in downward direction. You can see. And if we see its original, एक मिनट हाँ. See, you can see here. This is deflected above. जो सेंटर बीम था उससे ये ऊपर आया है and ये उससे नीचे गया है. तो like this much deflection is happened. And if you see the original 3D, you can see there will be very less deflection or no deflection actually. ये जो parameters अगर enlarge करेंगे तो पता चलेगा कि how much deflection will be there, because this deflection is in very small value. So that value you can see here. So you can see if we have changed the voltage, the deflection is also changed. You can see here initially whatever the deflection is, by applying 2-3 values you can have some conclusion that if we are increasing the voltage, then deflection is more in this direction, deflection is less in this direction. That also you can do. Then another value we will change, that is the parameter. In geometrical properties, if you want to change the parameter, then we will change others में जाके directly we will change this thickness. Suppose this thickness I will change to 10. So you see again what is the deflection. हर बार का snapshot ले लो तो पता चलेगा कि every time what changes are there. See, as we have changed its thickness, तो ये आपको clearly दिखाई दे रहा है देखो. So in first diagram, thickness is more, ये पूरा space occupy हो रहा था 3-dimensional की वजह से. But as here we have changed the thickness, so you can see the clearly space here.
Again, we will see the log file. You can see what changes are there. You can see, or you can observe how much changes are there. Okay, so like this, what you have to do? आप लोगों को क्या करना है इसमें मैं बताती हूँ. First, for model description, you take the print. Okay, you take the first print for input purpose. Then under parametric definition, you take the material property. You can change the material property. If you are changing the material property here, you go through that material properties and उसमें से एक material का property आप यहाँ पे ले लो. So if you change that material property, then you take the screenshot of this. Okay, where you are making changes, you take the screenshot of this screen. समझ में आया आपको? Then geometric property में you can change these dimensions also, these dimensions. Then इसका भी डायमेंशन आपको विड्थ इसका कितना है 10 है ना. सपोज हमने ये चेंज किया विड्थ, हमने ओवरऑल विड्थ अभी चेंज किया था ना. अभी इसका सपोज हमने चेंज किया विड्थ. सपोज आई हैव गिवन 20 माइक्रोमीटर. एनालिसिस कॉन्फ़िगरेशन ओके ऐसा है ये और सिमुलेट किया. देखो यहाँ पे पता चलेगा आपने थिकनेस चेंज किया है तो दैट थिकनेस विल बी 10 ओवरऑल थिकनेस. विड्थ चेंज किया है तो दैट विल बी विड्थ 20 माइक्रोमीटर. applied voltage will be 30 volt. This is simulation 4, means fourth time we are doing the simulation. So here again you can see in the net log file you can see the deflection dx और dy axis पे कितना कितना deflection. So that deflection is changed. तो आप बोल सकते हो कि width change किया तो deflection will be more. More in which direction and less in which direction, that also you can find out. समझ में आया क्या करना है? तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ क्या करना है. फर्स्ट मॉडल डिस्क्रिप्शन यू हैव टू टेक. सेकंड फर्स्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज का आपको लेना है. इफ यू आर यूजिंग द सेम यू कैन टेक सेम. अगर आपको चेंज करना है यू चेंज दिस प्रॉपर्टीज एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में दिस मच इज सफिशिएंट. ओके, 3 हो गए और एक चाहिए तो ले सकते हो आप. वन मोर फॉर दिस यू कैन टेक. तो 4 हो गए, मीन्स 2 पेजेस हो गए इनपुट के लिए. उसके बाद एनालिसिस कॉन्फ़िगरेशन में आप वोल्टेज अप्लाई करो. पहले 10 है बाय डिफॉल्ट. इफ यू आर गोइंग टू चेंज दिस वोल्टेज यू कैन टेक दिस वोल्टेज एंड इसको कस्टमाइज व्यू पॉइंट यस करना है. एंड उसके बाद सिमुलेशन. तो सिमुलेशन में एक लेना है आपको 3 डायमेंशनल एंड दिस लॉग फाइल. ठीक है, लॉग फाइल आप 2 बार ले लो. 2 वोल्टेज अगर चेंज कर रहे हो तो 2 बार लॉग फाइल लेना पड़ेगा. समझ में आया क्या क्या लेना है? और नीचे भी आपको फिर से जो सिमुलेशन कर रहे हो उसका मिलेगा कि किसके लिए आप कर रहे हो सिमुलेशन. ठीक है, विच सिमुलेशन यू आर यूजिंग, वो सिमुलेशन किसके लिए कर रहे हो, दैट वैल्यूज अगेन आर देयर. कहाँ पे चेंज किया आपने. तो ओनली दिस इज रिफ्लेक्टेड हियर. तो समझ में आया ये करना है आपको. तो दिस इज योर 4th एक्सपेरिमेंट. और उसके बाद कंक्लूजन में लिखना है आपको कि विड्थ चेंज किया या थिकनेस चेंज किया, वोल्टेज चेंज किया, तो व्हाट इज द आउटपुट डिफ्लेक्शन, व्हाट चेंजेस इन द आउटपुट डिफ्लेक्शन विल बी देयर, दैट यू हैव टू मेंशन इन द कंक्लूजन. तो आप करो ये. नैनो हब सबने किया है ना अकाउंट क्रिएट. 1 मिनट. आप सबने नैनो हब का अकाउंट क्रिएट किया है? यस. बाकी प्रतीक, शिवम,
किया है ना, तो आप लोगों को करना है अभी। यस मैम। You have to do the experiment now only. हाँ, जैसे मैंने बताया 2-3 वैल्यूज के लिए स्क्रीनशॉट लेके बाद में मैं राइटअप शेयर करूंगी, वो राइटअप और स्क्रीनशॉट दोनों साथ में कंबाइन करके आपको अंडर एक्सपेरिमेंट नंबर 4, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, मेरा लास्ट वीक थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने चेक नहीं किया, तो दिस वीक आई विल चेक योर एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन आपको टाइम टू टाइम डालना है उसके अंदर, ठीक है? तो यू डू इट, आई एम हियर ओनली, इफ एनी प्रॉब्लम्स आर देयर यू कैन आस्क मी, ओके? अभी करो आप, मैं शेयरिंग बंद करूं या रहने दो? करा पण मॅम चालेल. हाँ ठीक है. मॅम एक बोलायचं होतं हाँ. पीपीटीज रिलेटेड. हाँ. मॅम 3च्या जागी मॅम मॅक्स 4 ठेवा ना, कारण काय वी आर ट्राइंग टू कीप ऑल द ग्रुप मेंबर्स ऑफ आर फायनल प्रोजेक्ट अंडर वन ग्रुप, म्हणजे सो आमचा एफर्ट जे असतील ते थोडे कोऑर्डिनेटेड पण राहतील मग. प्रॉब्लेम काय माहिती का, त्यांच्या गाईडलाईन प्रमाणेच मॅक्झिमम फी आहे, युनिव्हर्सिटीच्या गाईडलाईन प्रमाणेच. मॅम पण मागच्या वेळेस पण बाकी सब्जेक्ट्स मध्ये पण 4 मॅक्स अलाव करत होते आम्हाला, म्हणून 4 मॅक्स खूप होती माहिती का तुला, ते प्रेझेंटेशन तुम्ही किती थोडं थोडं देणार, मग प्रत्येकाला बोलायला 5-5 मिनिट सुद्धा मिळणार नाही. अच्छा. दोघांमध्ये एक करता का? ओके मॅम चालेल. आणि कशासाठी म्हणते, मग चौघांचा ग्रुप आहे ना, तर ठीक आहे, एकटाच कोणाला तरी बाजूला काढण्यापेक्षा दोघं तरी तुम्ही बरे राहा. छोटे छोटे टॉपिक सिलेक्ट करा, दोघांमध्ये करा, चालेल मॅम. ते पण चालेल ना. फक्त चालेल. मला अजून 2-3 पेपर सर्च करून टाकावे लागतील, कारण 22x2 मग 44च मुलं होती. 30 PPTs होतील मॅम पुढे जाऊन. हा मी ते सांगायला 30 तरी पाहिजे, म्हणजे अजून मला 5-6 टॉपिक सांगावं लागतील, किंवा तुम्ही सिलेक्ट करा सिलेबस मधला एखादा डीएमडीच घेतला, डीएमडी वर पूर्ण एक डिव्हाइसेस जरी सिलेक्ट केले तरी चालते. पुढे मी ते राहू ऍड द्या, करेन. 3-3चं राहू द्या मॅम. 3-3चं ज्यांना करायचं, ज्यांना 2-2चं मी म्हटलं ना, 2-2चं ज्यांना करायचं त्यांनी 2-2 करा, ज्यांना 3-3 करायचं त्यांनी 3-3 करा. ज्यांच्या ग्रुपमध्ये प्रॉब्लेम आहे की ज्यांच्या ग्रुपमध्ये प्रॉब्लेम आहे की एकालाच कशाला सोडायचं असं वाटतं एखाद्या वेळेस, त्यातल्या कोणाला एकाला नाही म्हणायचं, त्यापेक्षा दोघं करा त्या ठिकाणी, एखादा छोटं टॉपिक सिलेक्ट करा आणि दोघं करा, दॅट विल बी बेटर. पण युनिव्हर्सिटीच्या गाईडलाईन प्रमाणे ना मॅक्झिमम 3 नंबर्स, 3 स्टुडंट्स आर अलाउड, ठीक आहे? ओके मॅम. ठीक. मॅम हा मी केलं सगळं व्हॅल्यू चेंज करून. आता हॅव यू सीन द डिफ्लेक्शन? हा मॅम. येस Yes, मॅम, ma'am. डिफ्लेक्शन येते. तर तो पहिल्यांदा डिफ्लेक्शन काय येते, दुसऱ्यांदा काय येते, यू नोट डाऊन दीज व्हॅल्यूज अँड डिपेंडिंग अपॉन दिस यू कॅन मेक द कन्क्लुजन. इनिशियली यू कॅन चेंज दॅट मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. मटेरियल प्रॉपर्टीज मी तुम्हाला हे केलं ना, मी ही स्क्रीन शेअर बंद करते आणि मी तुम्हाला मटेरियलची स्क्रीन शेअर करते, आणि तिथे मी सांगेल की तुम्हाला विच व्हॅल्यूज यू कॅन चेंज. ओके, वेट. तुम्ही माझ्या पीपीटीज कॅन यू हिअर मी? हो मॅडम. whatever the PPTs I am sending to you na, these are actually as per the books. हे chapter 7 जो आहे ना, तो बुक्स मधला ऍक्च्युली चॅप्टर 7, तो ऍक्च्युली दिस इज फॉर चॅप्टर नंबर 2. नाही तर तुमचं काही कन्फ्युजन होईल. मी ज्या चॅप्टरच्या अंडर केलेले आहेत पीपीटी शेअर, यू रेफर टू दॅट चॅप्टर, ओके, विदाउट सीइंग दिस. इथे तुम्हाला चॅप्टर 7 दिसेल तर तुम्हाला वाटेल हे कुठलं आहे, बट दीज आर रिलेटेड विथ चॅप्टर नंबर 2 इन अवर सिलेबस. तुम्हाला मी दाखवते. हा जो आहे ना, हिअर यू कॅन सी. तो विच व्हॅल्यूज यू हॅव टू मेन्शन देअर, यू हॅव टू मेन्शन ई यंग्स मॉड्युलस, ही व्हॅल्यू, ठीक आहे? आता त्यांनी सिलिकॉनची 165 घेतली त्यांनी, विच इज नियर अबाउट सिलिकॉन. आता तुम्हाला जर समजा पॉलिसिलिकॉन आहे का इथे, पॉलिसिलिकॉन नाहीये,
जर्मेनियम आहे, स्टेनलेस स्टील, अल्युमिनियम आहे. तो यू कॅन टेक फॉर अल्युमिनियम ऑल्सो. अल्युमिनियम पहा 0.70 आहे, मीन्स इट इज मोर फ्लेक्सिबल. ओके, so you can take the aluminum. Generally silicon carbide and silicon nitride and silicon dioxide you are not using for fabrication of moving parts. Okay, these are used for the masking material or deposition layer, sacrificial layer, insulating layer. For that purpose we are using these three. So these three we can't use. Polysilicon चा याच्यात नाही दिलेलं actually. I think it is mentioned at the time of polysilicon only. एक मिनिट आपण polysilicon चं बघूया. Polycrystalline silicon. The value is mentioned. Polysilicon 160 आहे बघा. Young's modulus is less than that silicon. Silicon ची तर 190 दिली, but it is a directional, therefore 165 they have taken. 0.23 and 2.8. So 0.23 and 160. You find out the density of this and you can write these values. Okay. 160 पेक्षा अजून कमी केलं तर तुम्हाला समजेल की how much deflection you are getting. So if you change the value of Young's modulus, then you can observe that you are getting more deflection. Means here screen shared आहे ना? Which screen is shared? 1 minute. Okay, here in the parametric definition, in the material property, you change it. Suppose you kept it as 0.23 and this as a 160. Then also you can see the changes in the deflection. Like this means you can try for another material, you can try for different voltages, you can try for different geometric property. और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि if we have changed the width, what deflection you are getting. If you have increased the voltage, what deflection you are getting. If you change the material property, what deflection you are getting. Like this. समझ में है? तो conclusion में ये हिसाब से आपको लिखना. तो you do it. I am here only. करो आप स्टार्ट करो. मॅम केली. हा तुझं झालं ना? ठीक आहे. मी ते राईटअप पण सायमल्टेनियसली शेअर करून देते. हो. माझं पण झालं. तुम्ही 2-3 वेगळ्या व्हॅल्यूज ना बघा. येस हो, मॅम. 3-4 व्हॅल्यूजला बघितलं. मी 3 केले. ठीक आहे, बाकी लोक पण करा रे. ह्या लोकांचंच कॉपी नका करू. बघा इथे डिफ्लेक्शन तुम्हाला समजेल कुठल्या डायरेक्शनला होते ते पण. ऍक्च्युली डिफ्लेक्शन खूप स्मॉल असल्यामुळे दिसत नाही ते असं डोळ्यांनी. ठीक आहे, काय काय व्हॅल्यूज तुम्ही चेंज केल्या दॅट विल बी विजिबल टू यू हिअर.
नहीं. मैम, मैडम, मॅडम, हाँ बोल. हा आता आम्ही तीन चार व्हॅल्यू साठी केलेलं आहे ना, मग ते जेवढे स्क्रीनशॉट काढले तेवढे सगळे अपलोड करायचे का? तेवढे सगळे मग एका याच्यात छोटे छोटे करून टाका.
किंवा 2 पेजवर, आता काही सॉफ्ट कॉपीच असल्यामुळे प्रॉब्लेम नाहीये, पण त्याच्यावर डिपेंडेंट तुमचा रिझल्ट पण झाला पाहिजे कन्क्लुजन. समजलं का? ओके. हा हा. काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही, हो. दिस इज युअर ऑब्झर्वेशन ना. हा. ऑब्झर्वेशन टेबल सारखंच झाला की तुम्ही व्हॅल्यू अप्लाय करताय आणि यू आर गेटिंग द डिफरंट रिफ्लेक्शन, यू आर अप्लाइंग द व्होल्टेज डिफरंट, यू आर गेटिंग द डिफरंट रिफ्लेक्शन. ओके, सो हा. यू राईट डाऊन द ऑब्झर्वेशन. ओके.
Have you done it? आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है. I have shared the assignment with you. Last date for submission I have given in next week's date, that is 24 February. So you submit before this along with write up and screenshot. Okay. So you can quit now or you can exit now.